Hello, everyone. I think we're live now. Good evening. Good evening, Ankur. Good evening, Pradyum. Namaskar. Ma'am, really appreciate you're doing so much for us. I'm glad you appreciate that. Good evening, Deepika. Good evening, finance crew. Good evening, Manisha. सबसे पहले I want confirmation that my audio and video are both clear so that we can proceed with the session. Come on, everyone. Am I clear? Good evening, Raghavendra. एक बार confirmation दे दो that my audio and video are both clear. Hi, update. Hi, Lalit. Good evening, Jyoti. Good evening, Jasmeet. Good evening, Anand, Anmol. Good evening, everyone. कितने बच्चे यहाँ पे ऐसे हैं who are going to appear for their examination in coming July? Lot of love from Kolkata, ma'am. Thank you so much, Ankur. Yes, clear. Audio video is perfect, ma'am. Yes, ma'am. You're clear. All clear. Good, good, good. Thank you so much, everyone, for confirming. चलो भाई सब क्लियर है तो पहले थोड़ी सी बातें कर लेते हैं एंड देन वी विल बिगिन विद द सेशन बिकॉज लाइव सेशंस की जो हमारी सीरीज विच वी स्टार्टिंग टुडे इट इज़ द फर्स्ट डे राइट. सबसे पहला कंफ्यूजन बच्चों के मन में, मैम, is this session going to be in English or Hindi? So yes, this session and the coming live sessions will be a mix. However, मैं कोशिश करूँगी कि आपकी maximum English मैं यूज़ करूँ बिकॉज इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज जिसमें हिंदी वाले बच्चे भी जो सुन रहे हैं उनको भी अल्टीमेटली दे हैव टू राइट इन इंग्लिश ओनली, राइट. सो इट विल बी मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स इंग्लिश बट इट विल बी अ मिक्स ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश. तो अगर आपको हिंदी नहीं भी समझ में आती है देन ऑल्सो यू विल अंडरस्टैंड द सेशन, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. ओके, राइट. एज आई सेड सबसे पहला क्वेश्चन यही आएगा और ये क्वेश्चन आने लगा मेरे पास. ओके. ओहो, क्वेश्चन के आंसर कोई भी चैट में नहीं लिखेगा. सी आई हैव ट्राइड टू मेक दिस सेशन वेरी इंटरेस्टिंग. आई एम नॉट इवन गोइंग टू शो यू दिस. चलो, you're not looking at the questions now. Okay, so this is going to be an interesting session. See, ऐसे मैं आपके साथ PDF share कर सकती हूँ. Of course, you can sit back at home and you can tick mark the question. But coming together with your friends, with your peers, having that competitive spirit and वो एक थोड़ा सा एग्जाम टाइप का environment कि without looking at the answers, I have to immediately respond. पोल पे मुझे आंसर करना है. Then I will assess myself. Okay, out of 15 questions, how many I have answered correctly? That atmosphere I want you to experience through these live sessions. Okay, so it is an altogether different thing. Enjoy this process, enjoy this learning, enjoy this experience. आपका बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगी मैं. टुडे इज द फर्स्ट सेशन इसलिए मैं इतनी बातें कर भी रही हूँ. अदरवाइज वी विल रिस्ट्रिक्ट आवर सेशंस टू कोर लर्निंग एंड कोर एक्सपीरियंसेस. ओके, उससे ज्यादा हमारा कुछ नहीं होगा. गुड इवनिंग एवरीवन. गुड इवनिंग अविरूप, राघवेंद्र, शीनम, अक्षता. आई एम सो सॉरी, आई एम नॉट एबल टू टेक ऑल द नेम्स. जिसके भी मिस हो गए उनको भी बहुत सारी विशेष मेरी तरफ से. Now, how are we going to proceed with the session? Chapter wise मैंने segregate किए कुछ selected MCQs. Okay, now from where have these MCQs asked, ma'am? See, ऐसा नहीं है कि ये MCQs आपको easy लग रहे हैं तो मैम ऐसे थोड़ी ना एग्जाम में आएंगे. These MCQs are a compilation from chapter wise segregation and a compilation from very own past year papers, very own MTPs. Some my inputs are also there, so some my designed questions are also there. So it is a compilation of some questions and which I have divided chapter wise. So what we are going to do, see, marathon I have already uploaded for your revision. Once you have done the entire course, you have to revise one chapter, come for this live session, test yourself through MCQs, and thereafter we'll also have sessions for the subjective questions. Okay, so whatever best I can do for you for your coming examination, I am going to do that. Amendments will also be uploaded. Now I think I have given you enough clarity and we are good to begin with this session. Right, come on everyone, thumbs up. भाई बता दिया ना, इंग्लिश हिंदी का आप कोई क्लैरिफिकेशन मुझसे नहीं पूछेगा. What you have to do is, it is going to be a poll based MCQ. Nobody will write the answers in chat. Okay, any extra thing that I ask, maybe the section number or maybe the related concept, that you can write in the chat, but you will not write A, B, C, D in the chat. Okay, it is going to be completely poll based and trust me, you are going to enjoy this one. Okay, fine everyone. So we are
going to begin the session now. But before we do that, I want everyone to like the video. Why is it more important to like the video? Because I want it to reach as many students as possible. Plus, when you like the video, we teachers feel that our efforts are being acknowledged. So we also feel motivated. So everyone, come on, like the video and let's begin. Right? ये एक PDF है. Anyone who doesn't have this PDF by now, it is being shared on my Telegram channel. So you can search Say Shivangi Agrawal on Telegram, or the link also we are sharing in the chat box. So go to that link, download this PDF of first chapter company formation and conversion के MCQs. I hope everyone has liked the video. And एक thumbs up भाई यहाँ पे भी दिखा दो that you are all ready for the session and your जोश spirits are all high. ठीक है, तो इस पर्टिकुलर फाइल में वी हैव 18 क्वेश्चंस. एट द एंड ऑफ द सेशन I want every student who is with me through the session to write कि भाई 18 में से कितने मिले. So this is going to be your assessment also, and I also want to know कि भाई कितने students कितने पानी में है, ये बोल सकती हूँ, है ना? Okay. थैंक यू मैम, आपके चलते मेरे लॉ के एग्जाम बहुत 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 अच्छे गए. आई एम सो ग्लैड टू हियर दैट अंकित. विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर. राइट, चलो भाई शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन. आई होप एवरीवन हैज डाउनलोडेड द PDF एंड दे आर रेडी टू रॉक. ओके एवरीवन, कम ऑन. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा लेट हो गया, कुछ लेट नहीं हुआ है कुणाल, यू आर राइट ऑन टाइम एंड वी गेट स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. Okay, chalo, fingers crossed, right? Good evening, everyone. All those who are joined late, please gel into the session quickly or shuru karo bhai. Question number 1. A company shall have its registered office from dash date of its incorporation, 7th day, 15th day, 21st day, and 30th day. Our poll for the very first question is live. There are 4 options which are given, and you have to tap on the option which you feel correct. एक यहां पे मैं आपको हिंट दूंगी कि इंस्टीट्यूट की मटेरियल में आपको जब ये क्वेश्चन मिलेगा, यू विल फाइंड द इनकरेक्ट आंसर बिकॉज दैट आंसर हैज नॉट बीन अमेंडेड सिंस द एजेस. इट्स नॉट अ रीसेंट अमेंडमेंट दैट वी आर विटनेसिंग. बहुत पहले ये चेंज आया था, बट इंस्टीट्यूट इन इट्स क्वेश्चंस हैज नॉट अमेंडेड. दैट डजंट मीन कि आप ओल्ड लिमिट पढ़ के जाओगे क्योंकि इंस्टीट्यूट की बुक में वो दिया है तो इंस्टीट्यूट आपके आंसर को गलत कर देगा इफ यू राइट द करेक्ट लिमिट. नो, यू हैव टू लर्न द करेक्ट वन ओनली. ओके फाइन. सो आई वॉन्ट एवरी वन टू पार्टिसिपेट. बहुत कम बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं. देर आर सो मेनी स्टूडेंट्स हु आर वॉचिंग दिस सेशन बट वेरी लेस स्टूडेंट्स हु आर पार्टिसिपेटिंग इन द वोट्स. कम ऑन, पोल, everyone actively participate in it. But I can see most of you are giving me correct answer. Around 75% votes जो मुझे मिले हैं so far, they are for option D, which is the correct answer. आई होप भाई बच्चों को पहला आंसर जो मिला है वो सही मिला है. जिनको लग रहा है कि 15th डे इज द करेक्ट आंसर, वो अपने स्टडी, अपनी लर्निंग को थोड़ा सा अपडेट कर लें. द करेक्ट आंसर स्टैंड्स एज 30th डे, सेक्शन 12 ऑफ कंपनीज एक्ट. राइट? Yes, please don't write answers in the chat, only through poll. Okay, everyone. Now we move to question number 2. As per Companies Act, companies must have a minimum of 1 director. Okay. The sole shareholder can himself be the sole director. The company may have a maximum of 15 directors. 3 statements have been given to us. And उसके बाद हमसे पूछा जा रहा है that these features belong to which company? Which of the following company? A, private, B, small, C, public, and D, one-person company. So we have these 4 options. The poll is live. Come on, everyone. I want you to vote now. Which is the correct option? Question number 2. ये सारे के सारे questions जो हम पढ़ रहे हैं, I have not incorporated the questions relating to निधि कंपनी. ओके, तो निधि कंपनी के क्वेश्चंस मैं आपसे कभी और ऐसे ही डिस्कस कर लूंगी.
and producer, because they are not in the new syllabus, right? So these are the questions which are common for both 2016 syllabus and 2022 syllabus in this chapter of company formation and conversion. Okay, so far we have got good votes and I'm so happy to see कि 85% students ने इस बार correct answer दिया है मुझे। और करेक्ट आंसर हमारा क्या है? 1% कंपनी। एक यहाँ पे मिथ हमारा और दूर हुआ है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को होता है कि 1% कंपनी में एक ही मेंबर होता है, मिनिमम भी 1 मैक्सिमम भी 1। करेक्ट। एक ही डायरेक्टर होता है, मिनिमम भी 1 मैक्सिमम भी 1। इनकरेक्ट। मिनिमम 1 डायरेक्टर एंड दे कैन बी मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स व्हिच कैन फर्दर बी इंक्रीज बाय पासिंग एसआर, बट वो हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है। CMA इंटर का भी लेंगे क्या आप? डेफिनेटली रचना, वी विल हैव सेशंस फॉर CMA इंटर एज वेल, यू जस्ट स्टे ट्यून्ड, वी आर going to push a lot of videos and sessions for CMA inter as well. Okay. Sorry. Question number 3. Which among the following transaction does not mean significant accounting transaction? Now you might be thinking कि मैम इंस्टीट्यूट की अगर हम बुक खोल के देखते हैं तो डोरमेंट कंपनी की डेफिनेशन में we don't find this particular content, yet it is asked in examination by institute, right? So you all must know that what does out of all these 4 इसमें से क्या है जो significant accounting transaction नहीं है? Okay. Payment of fees by a company to the registrar. Payment made by it to fulfill the requirements of this act and allotment of shares to fulfill the requirements of this act and all of the above. सोच समझ के आराम से इसका आंसर देना. Significant accounting transaction. See, when a company, this concept is moreover related to dormant company, right? तो जब भी एक कंपनी dormant company होती है या हम उसको बोलते हैं dormant company is a company which is formed for some future project और जिसमें significant accounting transaction नहीं होता है. But significant accounting transactions की अगर हम बात करें तो उसमें कुछ basic चीजें which is mandatory, भाई ये तो करनी ही करनी है, वो incorporate नहीं होती है. Right, which also includes the payment for maintenance of office and its records, which is not given over here. तो भाई significant accounting transactions means transactions other than this and the one which I told you. So our correct answer stands as option number D, all of the above. Right? Chalo. I'm so happy to see your preparation. Around 78% students have given me the correct answer. Question number 4. Dormant company is formed and registered under the Companies Act. Question number 4. The poll should be live. For a future project to hold an asset, intellectual property and has no significant accounting transaction and all of the above. जितने बच्चे पोल कर लेंगे वो मुझे चैट बॉक्स में बताएंगे कि डॉर्मेंट कंपनी का सेक्शन नंबर कौन सा है. लेट मी सी एनीवन इज हियर हु कैन क्रैक दिस वन. डॉर्मेंट कंपनी क्यों बनती है? भाई डॉर्मेंट कंपनी वो भी हो जाती है जो 2 साल तक भाई अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिटर्न्स फाइल नहीं करती है, तो वो एक अलग चीज होती है, हम पढ़ते हैं. बट अदरवाइज ऑल्सो वी कैन फॉर्म अ कंपनी फॉर अ फ्यूचर प्रोजेक्ट एंड obtain the status of dormancy, right? तो इसमें से क्या चीज है? Which is the option which is correct? First of all, you will give me the poll answer and thereafter you will write the section in the chat box. Okay, कुछ बच्चे हैं. C 464 is incorrect. 455 is the correct answer. चलो. एंड अगर हम अपने क्वेश्चन की बात करें तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. वेल डन स्टूडेंट्स. क्वेश्चन नंबर 5, हियर वी गो. द नेशनैलिटी ऑफ अ कंपनी इज डिसाइडेड बाय. मेरा पहला सवाल आपसे, क्या नेशनैलिटी हो भी सकती है कंपनी की? कैन अ कंपनी हैव अ नेशनैलिटी, अ डोमिसाइल, सिटीजनशिप? क्या चीज है जो कंपनी को मिल सकती है और कंपनी को नहीं मिल सकती है? बट ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया तो नेशनैलिटी तो कंपनी की होती ही होगी. सो नेशनैलिटी ऑफ कंपनी इज डिसाइडेड बाय द प्लेस ऑफ रेसिडेंस ऑफ डायरेक्टर्स, place of registered office of the company, place where books of accounts of the company are kept, and none of the above. So we have 4 options and these are absolutely simple options which are being given to us. ये भाई गलत तो मुझे नहीं मिलना चाहिए, बट बहुत सारे बच्चे इसका गलत आंसर भी दे रहे हैं.
Come on, everyone. You are confused between option B and option D. Because some students feel कि nationality तो कंपनी की होती ही नहीं है. Company cannot have a citizenship. Company citizen नहीं होती है. Yet it can have domicile. It can have nationality. It can have residential status. है ना? तभी तो हम बोलते हैं ये इंडियन कंपनी है. भाई इंडियन कंपनी कैसे हो गए? हम इंडियन से, वो कंपनी भी इंडियन कंपनी है. तो कैसे डिटरमाइन होगा? बाय place of registered office of the company. So our correct option for question number 5 is option B. So 65% students ने ही सिर्फ करेक्ट आंसर दिया है. इसमें आप लोग कहीं ना कहीं पीछे रह गए हो. मुझे चाहिए कि एटलीस्ट 80% students should give the correct answer. Question number 6. According to section 2 clause 62 of Companies Act, 1-person company means a company which has only one person as a member. Fine, we know that. A company formed under 1-person company may be either company limited by shares, limited by guarantee, unlimited company or any of the above. कोई भी हो सकती है. चलो भाई फटाफट से आंसर करो. We are doing the video in 90% English language only, Tony. Come on everyone, I'm waiting for your votes and answer. जल्दी आप लोग चाहते हो अगर ये सेशन जल्दी चले तो you have to contribute equally. You have to vote as quick as possible, right? Because I am taking the session for everyone. तो भाई मैं ऐसे नहीं कर सकती. मैम मेरा सही था, प्लीज मेंशन माय नेम. क्या चीज सही थी? सेक्शन नंबर. रमीज राजा. Okay, please don't write answers in the chat box, okay? Shubham not writing answers in the chat. ठीक है, एक बार, दो बार, चार बार लिखोगे, please नहीं लिखो. Okay, so we finally conclude that our correct answer for question number 6 is D, all three above. So a company may be formed. अब जो मैं question पूछने जा रही हूँ, the next question, question number 7. ये बहुत ध्यान से आपको आंसर करना है. A company shall be a small company only if its paid up share capital does not exceed dash and its turnover does not exceed dash. Here I am very sure the students will be confused. How they will be confused? Option number A, C and D. ऑप्शन बी तो नहीं है. आई डोंट थिंक ऑप्शन बी पे मेरे पास वोट्स आने चाहिए, बट आई एम वेरी श्योर कि 3 ऑप्शंस में आप लोग कंफ्यूज होगे. सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट वन और इसको बहुत ध्यान से आप लोग वोट करो. As expected, A, C and D में confusion है. 31% students बोल रहे हैं A, 30% are saying C and 26% are saying D. Okay, oh my God, it's absolutely mess. भाई क्या बोल रहे हो? स्मॉल कंपनी ने बहुत कंफ्यूज किया है बच्चों को. नहीं, don't write answers in the chat. Ma'am, can CA final people also participate? Yes, you can participate, but CA final and CMA final, slight difference in syllabus. We are doing the first chapter, company formation and conversion, which is not actually there in CA final syllabus. But of course, as a part of your knowledge, you must know all these things. And if you want to participate and enjoy, you can. Okay. तो भाई इसका correct answer stands as A. 4 crores and 40 crores. How, ma'am? सेक्शन 2 क्लॉज 85 ऑफ कंपनीज एक्ट जो हमारा स्मॉल कंपनी को डिफाइन करती है वो ये बोलती है स्मॉल कंपनी इज अ कंपनी ओनली इफ इट्स पेड अप शेयर कैपिटल डज नॉट एक्सीड 50 lakhs or such higher sum as may be prescribed. Such higher sum prescribed is 4 crores. Turnover does not exceed 2 crores and such higher sum as may be prescribed. The highest sum prescribed is 40 crores. This is the latest amendment which you have seen or which you should be knowing in the definition of small company. For all those who do not know this latest amendment, please don't worry at all. We are going to soon upload the amendment for you all, right? So in that CMA final law amendment, you will find this change as well. Okay, right. Fine. Moving to next question, question number 8. According to section 2 clause 6 of Companies Act, an associate company in relation to another company means a company in which that other company has a significant influence. And how do you define that significant influence? Is it only 20% of total voting power?
It is 20% of voting power or control or participation in business decisions? Is it 25% or 25% of control of participation in business decisions? So we have four options, A, B, C, and D, and the poll is live. Come on, everyone. भाई आंसर करो. I want to see many मतलब एक्चुअली मैं सारे तो नहीं बोल सकती, बट आई वॉन्ट टू सी द मैक्सिमम स्टूडेंट्स कि अगर 18 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो भाई 18 में 18 करेक्ट आए. मैम, यू ऑलरेडी मेड यूट्यूब शॉर्ट्स ऑन लिमिट 2. यस, इफ यू हैव सीन दैट. मैम, हाउ टू गेट दिस MCQ notes on Telegram link is given in the chat. Correct. Thank you, Rapru Mano, for helping me out. Okay, so we have the result of the poll right away, and the correct answer is option B. Question number 8, option B, with only 44% students giving me the correct answer. बहुत confusion है भाई. चलो क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 में है एक थोड़ा सा ट्विस्ट, बट ठीक है, पहले हम देखते हैं and then I'm going to tell you this. Okay, so which of the following would not constitute to be KMP as per section 2 clause 51 of Companies Act 2013? CEO or MD or manager, company secretary, one such other officer not more than one level below the directors who is designated in whole-time employment, and CFO. So we have been given 4 options. ठीक है, अब भाई वोटिंग तो शुरू हो गई है और वोट्स कर रहे हैं बच्चे एकदम आराम से. 11%, 67%, 31%, 15%. So you all are voting. मिक्स एंड मैच कंफ्यूजन भरी वोटिंग हो रही है. कुछ बोल रहे हैं 45%, कुछ बोल रहे हैं 15%. आई एम सो ग्लैड यू हैवंट सीन द आंसर. भाई आंसर देख के आप वोट्स नहीं दे रहे हो, ये तो मुझे समझ में आ गया है, पर अब वोट्स आपके किसी के भी सही होंगे ही नहीं, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज इनकरेक्ट. इसके जो 4 ऑप्शंस दिए हैं ये चारों के चारों KMP होते हैं यार. ऑल आर KMP. इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन है. अब ऐसे क्वेश्चंस हमारे जब सामने आते हैं देन वी गेट कंफ्यूज्ड कि भाई क्या लिखे, है ना. तो एग्जाम में 100% ऐसा क्वेश्चन आना ही नहीं चाहिए, बिकॉज इसमें ऐसा भी कोई आंसर नहीं है कि मैं आपको बोल दूं कि ये लिख लो यार, ये ज्यादा सही है. भाई सारे के सारे गलत है. There is no option which you will find is correct, right? अब क्योंकि मैंने भाई आंसर एज इट इज इंस्टीट्यूट का लिखा है तो आंसर आपको दिखेगा ये वाला, पर ये गलत है, तो इसको आप काट लीजिए एंड यहां पे आप डी में लिखिए प्रोडक्ट मैनेजर, एंड दैट विल बी योर करेक्ट आंसर. सो ये पोल खारिज की जाती है, राइट? आई कैन नॉट से दैट एनी वन. ऑप्शन ही नहीं आ रहा है मैम. ऑप्शन आएगा बेटा, रिफ्रेश करो या तो गो बैक एंड देन कम अगेन, राइट? सी वी are planning these MCQ sessions alternate days, right? So stay tuned to the channel. You will find after the session ends by tomorrow, the next session will also be scheduled. Okay, तो अब हम करेंगे अगले चैप्टर का. Fine. Okay, question number 10. That's CMA. Don't even say that. बहुत बहुत कुछ मैं बोलने लग जाऊंगी उसके बाद. खैर, क्वेश्चन नंबर 10 अगेन स्मॉल कंपनी का ये क्वेश्चन है, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल बिकॉज हियर दे आर नॉट आस्किंग यू द लिमिट विच हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड. हियर दे आर आस्किंग यू समथिंग एल्स. सो केयरफुली रीड द क्वेश्चन. स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी विद अ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ विच डज नॉट एक्सीड dash or such higher sum as may be prescribed. It shall not be more than dash. So we are not being asked anything related to turnover. यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम पेड अप कैपिटल की बात कर रहे हैं. सेक्शन 2 क्लॉज 85 में जो कंटेंट है with respect to paid up capital, that has to be reproduced. You don't have to write the limit which is prescribed. So carefully read the question and you have 4 options. 5 lakh 1 crore, 50 lakh 5 crore, 50 lakh 10 crores and none of the above. So carefully check this. In fact, I told you this also. जब हमने previous question अभी small company का discuss किया तब मैंने आपको ये बता भी दिया है. Come on everyone. चलो. Most of you have given me the correct answer with 54% votes only although. But चलो. Option C is the correct answer. Moving to question number 11. Company registered under dash.
shall amalgamate only with another company registered under this section and having similar objects. Very 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 simple question. फटाफट आप लोग वोट करोगे. एंड सेक्शन 7 किस चीज का है, सेक्शन 9 किस चीज का है, सेक्शन 10 किस चीज का है और सेक्शन 8 किस चीज का है? Is there anyone who can tell me about all these 4 sections? बहुत briefly आपको लिखना है भाई सेक्शन 7 इस चीज का है. ठीक है, तो किसी को सारे सेक्शंस पता भी हैं कि किस चीज के हैं या नहीं? बिकॉज ये वाला तो सबको पता होगा. आई नो मोस्ट ऑफ यू विल गिव मी द करेक्ट आंसर. दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन टू क्रैक, right? And around 83% students have already given me the correct answer. So I think this is actually an easy one. But is there anyone who can write me the content of all 4 sections? Not exactly the content, but just a heading that, okay, fine, this section says about this thing. एक आध सेक्शन पता हो तो वही लिख दो यार. सेक्शन 7 पता है वो लिख दो, सेक्शन 9 पता है वो लिख दो, सेक्शन 10 पता है वो लिख दो. सेक्शन 7 इनकॉर्पोरेशन, ग्रेट. अमित गुप्ता, अमन शर्मा, सेक्शन 8 एनपीओ, फाइन. कान्हा नायक, सेक्शन 7 फॉर्मेशन ऑफ कंपनी. ओके, आइडियली सेक्शन 3 में हम फॉर्मेशन के बारे में ज्यादा पढ़ते हैं. इनकॉर्पोरेशन, रजिस्ट्रेशन, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स. चलो भाई, कुछ कुछ लोगों को तो अच्छी नॉलेज है दिख रहा है मुझे. एंड सेक्शन 8 इज एनपीओ, विच इज एक्चुअली द करेक्ट आंसर. एंड द पोल, एंड वी वांट द पोल फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन 11 का करेक्ट आंसर था हमारा ऑप्शन बी. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12. प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी आर. कंपनी के प्रमोटर्स क्या एजेंट होते हैं, क्या ट्रस्टी होते हैं, क्या एम्प्लॉय होते हैं, और none of the above. So we have these 4 options which are given. Promoters of the company. Promoters of the company are not employee. सबसे पहली बात. अब रही बात, क्या वो एजेंट होते हैं या वो ट्रस्टी होते हैं? So they can neither be agent nor be trustee. Why ma'am? एजेंट किसके बनेंगे? कोई एग्जिस्टेंस में होगा उसके ना आप एजेंट बनोगे. देयर हैज टू बी अ प्रिंसिपल. व्हेन देयर इज अ प्रिंसिपल देन ओनली यू कैन बिकम एन एजेंट. और कंपनी तो अभी बनी ही नहीं है ना, तो फिर एजेंट कैसे हो सकते हैं? ट्रस्टी, अगेन अगर हम ट्रस्टी की बात करें तो आप ट्रस्टी किसके बनते हो? ट्रस्टी उसके बनते हो जो एग्जिस्टेंस में हो. वो प्रॉपर्टी होल्ड करेगा तब आप उसके ट्रस्टी बन सकते हो, है ना? तो वो तो है ही नहीं अभी. तो यू आर एक्चुअली इन अ फिड्यूशियरी कैपेसिटी. सो करेक्ट आंसर इसमें से जो हमारा आता है वो आता है नन ऑफ द अबव. ओके, बहुत अच्छे आंसर्स तो नहीं मिले हैं, बट स्टिल आई कैन कंक्लूड दैट 54% स्टूडेंट्स हैव गिवन मी करेक्ट आंसर. ओके मैम, ये तो मैं इंटर में पढ़ रहा हूं. दैट्स द ट्रेजेडी ऑफ सीएमए करिकुलम. फाउंडेशन का इंटर, इंटर का फाइनल, तो बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग ऑफ सिलेबस है which actually confuses the student, and at the end of the day you have immense syllabus to cover at every stage. ठीक है, तो ये है थोड़ी सी प्रॉब्लम, बट इट्स ओके. मैम इतना इजी पेपर एमसीक्यू नहीं आता. बेटा ये जो आपके क्वेश्चंस हैं ये पास्ट ईयर पेपर के ही क्वेश्चंस हैं, ठीक है? सो डोंट से कि इतने इजी एमसीक्यूज नहीं आते. आते हैं, बड़े आराम से आते हैं. आपने अगर पढ़ लिया है तो आपको इजी लगेंगे, जो टॉपिक आपने नहीं पढ़ा है वो आपको डिफिकल्ट लगेगा. दैट्स इट, राइट? तो हम फर्स्ट चैप्टर के ही क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं ना. सो फर्स्ट चैप्टर इज समथिंग जो थोड़ा रच रच के पढ़ते हैं ना, तो इसलिए यू फाइंड देम इजी. ओके, एज यू प्रोग्रेस टू नेक्स्ट चैप्टर्स मे बी यूल फाइंड सम डिफिकल्ट एमसीक्यूज ऑल्सो. ओके, right. Okay. Question number 13. The term resident in India means a person who has stayed in India for a period of not less than dash days during the immediately preceding financial year. Again, now I know the students will be confused between option B and D. Option A and 3 to C and to shayad main eliminate kar दूं, but you might be confused between option B and D. Let me be very clear, since we are doing the MCQs relating to the very first chapter, company formation and conversion, this term resident in India that we're talking about relates to one person company. Okay, it has nothing to do with what you read in tax or anywhere else. All you are concerned about is what you read in the concept of one person company. So what is the correct answer? Most of you are giving me the correct answer to be option B, 182 days, which let me tell you is incorrect. भाई ये सही नहीं है.
1% कंपनी के डेफिनेशन में, 1% कंपनी के मीनिंग में, रादर आई वुड से देयर वाज एन अमेंडमेंट, ऑल्दो ये भी बहुत रिसेंट अमेंडमेंट नहीं है, काफी टाइम हो गया, बट स्टिल देयर वाज एन अमेंडमेंट एंड द डेफिनेशन ऑफ रेसिडेंट हैज बीन defined or redefined, you can say, which means the correct answer stands at D, 120 days. Moving to question number 14. बहुत ही गंदा आंसर मुझे इस बार का मिला था, but you have to rectify yourself. Okay. Question number 14. Again, a promoter can be an individual, firm, association of persons, or all of the above. क्विकली, जितनी जल्दी पोल करोगे उतनी जल्दी हमारा सेशन होगा. कम ऑन एवरीवन. अ प्रमोटर, क्या वो सिर्फ एक इंडिविजुअल हो सकता है, और इट कैन बी फर्म ऑल्सो, और इट कैन बी एसोसिएशन ऑफ पर्संस ऑल्सो, ऑल ऑफ द अबव, सब हो सकता है, या इट हैज टू बी ओनली इंडिविजुअल. क्वेश्चन नंबर 14, द पोल. Okay, fine. So 80% students have given me the correct answer. I don't think I need to explain. I don't think I need to give you further explanation because most of you have got it correct, right? Please don't write answers in chat. मेरी humble request है आपसे, इतने छोटे से instruction को आप नहीं समझ पा रहे हो. Question number 15. See, it becomes difficult for the students who are trying to attempt. If they are trying to attempt on the poll and you prompt an answer over there, तो उनका कहीं ना कहीं ध्यान जाएगा, अरे बच्चा डी लिख रहा है, डी क्या है. ठीक है, तो सबको पार्टिसिपेट करने दो यार, हेल्प योर फ्रेंड्स. ओके. क्वेश्चन नंबर 15. इवन इफ यू डोंट गेट, कभी कभी ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स बोलते हैं मेरे को पोल नहीं दिख रहा मैम, तो अगर नहीं दिख रहा है तो आप अपने कॉपी पे कहीं आंसर लिख लो एंड बाद में जब मैं आंसर बताती हूँ देन कंपेयर द आंसर वेदर यू हैव गॉट इट करेक्ट और नॉट, राइट. क्वेश्चन नंबर 15. अ पर्सन शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट ओपीसी ओनली इफ ही इज अ नेचुरल पर्सन एंड एन इंडियन सिटीजन एंड रेसिडेंट, अ नेचुरल पर्सन एंड रेसिडेंट, अ नेचुरल पर्सन, इंडियन सिटीजन एंड रेसिडेंट. So actually it is an easy question, but again there was an amendment in this part, so I hope you get it correct. A, B, C and D. Let me see. Okay, so fine. Most of the students as expected are confused between option A and option D. भाई B और C भी कुछ लिख दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कुछ तो नींद से उठ के बैठ गए, बस कुछ भी मैम बोल रही है चलो टैप कर देते हैं. कुछ तो दिमाग लगाओ. Come on everyone. Absolutely mixed answers मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं. Let me be very clear and please mark this question because you have to understand that now one person company can be incorporated by any person even if he is not resident in India. Nominee of one person company can also be a non-resident. What is the basic requirement now? Is that he has to be a natural person and an Indian citizen. So residential status is not important now to incorporate OPC or to become nominee of OPC. So our correct answer stands as option number A. Option A. Yes, I'm explaining you in English also. Fine. Okay, moving to the next question, question number 16. As per section 13 of Companies Act 2013, name of company can be changed by the shareholders. Can the company's name be changed? Of course, yes, it can be changed. By changing name of the company means we are altering the memorandum. So alteration of memorandum, section 13, that's what we are talking about. But how can it be changed? Does it require special resolution or an ordinary resolution? And is that sufficient, or we need also approval of CG, or we need consent of creditors? What is it? Or none of the above? So you have 4 options which are given and the poll is live. Come on everyone. Why do you think you need special resolution? 83% students have given me the option B. 83% students. Name of the company can be changed by shareholders anytime by dash and dash. Okay, all those who have written the poll, वो भाई लिख के बताओ मुझे chat box में कि when you do not require approval of CG. ये बात तो clear है that you need approval of CG in all cases. राइट तो पहली चीज क्लियर है, यू टेल मी.
When is the case when you do not require approval of CG? Section 13 is absolutely correct. You are writing the correct section numbers, and most of you have given me the correct answer also. 74% students are saying B, which is actually the correct answer, but none of you have yet told me that what is the special case when you do not require approval of CG. See, memorandum and articles both can be altered by passing special resolution only. So we do not need ordinary resolution. We need special resolution, that is for sure. But we also need approval of central government for changing the name in ordinary cases. But we do not need approval of CG when you are converting the company, say, private to public. So you are adding, you are deleting that private word. So for just that name change, you do not need approval of CG. Okay, moving to question number 17. Only 2 more questions left. Come on, everyone. Answer was visible. Dash cannot be a subscriber to memorandum and articles. A company, government, minor, all of these. Can a company be a subscriber to memorandum of another company? Well, the answer should be yes. Can government be? Can a minor be? So you have 4 options, 4 choices. And this is very easy, so I won't take much time. Okay, many students think that a company cannot be a subscriber. See, a company can never be a sole subscriber, or company can never be a subscriber to one person company. Here we are talking in general. So here we will not restrict our answer to one person company. One person company can be formed only by a natural person, but otherwise any company can be formed, and a company, government can be the subscriber. Who cannot be the subscriber is minor. So 49% students have given me the correct answer C, and here we move to the last question of our session. This has to be high in spirits. A firm may become the member of a private company, a public company, both A and B, or a company licensed under section 8. See, जो firm होता है ना, that does not have a legal identity, I would say, right? So it is not a legal person in the eyes of law, ऐसे हम बोल सकते हैं. So firm can never be a member of any company. Even if firm wants to purchase or invest in the shares of some company, it has to be in the name of partner. But एक तरीके की company होती है which is an exception, and that exception, my dear, is section 8 company. So very few students have given me the correct answer, but a firm may become a member of section 8 company. It cannot become member of any other company. Okay, so that is the only exception that you read about. But only 22% students have given me the correct answer. Fine. Okay, Lalit 14 correct, Sheenam 15 correct. Yes, I read your answer. Chalo, all the questions are done. Now everyone, मैम सिलेबस में एमटीपी के सारे डायरेक्ट क्वेश्चन है और सारा इंस्टीट्यूट मटेरियल से ही है, तो क्या बस इंस्टीट्यूट मटेरियल करने से हो जाएगा? सी व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट कुणाल, इंस्टीट्यूट मटेरियल करने से मैं ऐसा नहीं बोल सकती कि हो जाएगा, बिकॉज इंस्टीट्यूट मटेरियल में आधी चीज़ें आपकी इनकरेक्ट दी रहती हैं, आधी चीज़ें गलत दी रहती हैं और आधी चीज़ें इनकम्प्लीट दी रहती हैं, राइट? सो आई डू नॉट लाइक इंस्टीट्यूट्स मटेरियल एट ऑल. इफ यू आर रीडिंग फ्रॉम द मटेरियल, प्लीज आप कोई और बुक रेफर करो. हाँ, अगर आप सिर्फ क्वेश्चंस की बात कर रहे हो तो क्वेश्चंस भी ऐसा नहीं है कि आपके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस कोई आते ही नहीं है. इंस्टीट्यूट हैज मोर इंक्लाइनेशन टुवर्ड्स डायरेक्ट क्वेश्चंस, बट ऑफ कोर्स यू आर आस्क्ड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस ऑल्सो. ठीक है, तो आपको वो कहीं ना कहीं से तो करने पड़ेंगे. In the question determination, we have to assume what kind of company. See, you read about the concept of resident only in the case of OPC, so you have to do that only. Fine. Sunny 12 correct, Priya 15 correct, Aman 16 correct, great. Deepika 16 correct, Rajendra 15, Rapuru 16, Rakesh 17 correct. So far the highest, great. Raghavendra 11, Mr. Kannan 14, Kata 14. Okay, fine. Great. I am happy for your active participation. Our next MCQ session will be most probably day after tomorrow.
Right, so stay tuned and hope you all enjoyed the session. All those who haven't liked the video yet, please एक like तो बनता है and see you all in the next live session. ठीक है भाई, मजा आया हो तो बता के जरूर जाना through comments. Okay. Thank you everyone.